रजी साहब, अब इसके बाद आपका नंबर है जनाब। किसका? तैयार हो जाइए। चाय पी चाय। रजी साहब का तारुफ ये है कि ये हमारे क्लासों के थे और साथ काफी रहे हैं। जब अलीगढ़ में रहा करते शौकत मंजिल में, शुक्रिया। शाम को इकट्ठा होते थे। जल्दी से बोलिए रिक्शा। जी जी, तो गपशप हुआ करती थी। ये हम ये जा रहे हैं कि ये हटा नजर आए, नजर नहीं आ रहा। जाइए कि नहीं, कोई जाए मत, कोई जाए मत। इस साहब में एक ऐसी क्वालिटी है जो उनके पूरे खानदान में किसी के पास नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा मौजू तो वही है जो सर सैयद का मौजू है, जो आप खवातीन हजरात का मौजू है। तो जो कहना चाह रहा हूँ कि अभी फक्का जी ने बड़ा अच्छा मजमून पढ़ा। तो अभी हमारे यहाँ पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क में हम लोगों ने सर सैयद डे मनाया, और ये सर सैयद डे बड़ी खूबसूरती से मनाया गया था। उसमें लोगों ने बहुत अच्छे म्यूजिक प्रोग्राम रखा। जो सर सैयद का जो मनाया जाता है तो लोग उसमें बहुत खुशी से मनाते हैं उसे। तो उस खुशी का इजहार आप लोगों ने कहीं वीडियो में भी देखा होगा। तो बहरहाल वो उसी का इजहार था। उस हमारे समाज जी। अच्छा माशाल्लाह, चलिए उसका तो खैर साहब वो वीडियो वायरल हो गया है। अच्छा, वायरल हो गया। अपनी फैमिली के जो है वो सामने आए। नहीं, इतना बड़े टैलेंट सामने हलाल डांस भी हुआ। सर सैयद की याद आ गई, वो भी तो भालू डांस करते थे। उसी फंक्शन में चूंकि हम हर साल अलीगढ़ की एक मैगजीन निकालते थे जो काफी अच्छी होती थी। इस साल उसका मौका नहीं हुआ, तो उसके यहाँ पे हम लोगों ने एक छोटा सा पैम्फलेट निकाला है, और उस पैम्फलेट में जाहिर है छोटी छोटी बातें थी, और उसमें मैंने एक छोटा सा मजमून भी लिखा था सर सैयद के ऊपर। तो मैं चाहता हूँ कि वही आपकी नजर कर दूंगा। मेरा खाली ये पिछले हफ्ते छपा है, तो उम्मीद है आप जरा सब्र और तहम्मुल से इस हमारे मजमून को सुनेंगे। ये वो पैम्फलेट था जो हम लोगों ने शाये किया है, और ये शायद इंटरनेट है भी, है ना। तो ये है, इसी में मेरा एक मजमून छपा है। एक छप गया, एक छोटी सी एक वो है। रजी साहब को भेज देना। I'll send you। ये चूंकि अंग्रेजी में, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी जरूर पढ़ें अच्छी तरीके से। हाँ। अच्छा, तो इसका उन्वान ये है जी, इरशाद जी, उसका उन्वान है। एक और बताऊं, मेरे अब्बा जान। एक सेकंड, अलीगढ़ का ये देखिए पर्चा। मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब साहब। अच्छा, चूंकि हमारी मादरी जबान तो उर्दू, लेकिन हमारी मादरी जबान तो उर्दू है, लेकिन मेरी फादरी जबान अंग्रेजी है। तो फादरी जबान तो अंग्रेजी है। तो मैं उसी फादरी जबान में अपना मजमून पेश कर रहा हूँ। अच्छा, तो उन्वान है रिमेम्बरिंग सर सैयद अहमद ड्यूरिंग पेंडेमिक। अच्छा, last year and a half have been the most stressful time, at least in my lifetime. I have seen people dying, sick, desperate, without any help for months together. Now I realize how it feels to be helpless and let alone. Let me go back to 1857. The War of Independence was being fought by few brave men and women. The empire strikes back with full vengeance. The result was obvious. Muslims soon became the victim of the wrath of a superpower called British Empire. On all fronts, Sir Syed and his close relatives also were not exception. They also suffered a lot. They also faced consequences. The difference between a brave visionary man like Sir Syed and the common man like Maulvi Bakshish, other Maulvis, all were very, very clear. Unlike most of us in desperate situation like this pandemic, Sir Syed decided to fight the pandemic of illiteracy. Sir Syed started fighting the pandemic of illiteracy, ignorance, and incompetence spread among the defeated nations called Muslims. A healthy nation was soon turning into a sick, fragile, and flimsy society. Death was imminent if left untreated. The situation was becoming grimmer and grimmer every day. There was no easy treatment
available at that time. The worst of all, patients themselves were not realizing the danger of this fatal sickness. There was an urgent need for a hospital as well as a treatment to save this life of this sick nation. Sir Syed Ahmad was alone to fight this pandemic. He started this alone by himself. He realized he needs a hospital, a vaccine, and to treat this pandemic. But the big hurdle was the money, and he didn't have the money. So Syed traveled all over the place to beg and collect the money to open this hospital. He named this hospital as Madrasat Ulum. Madrasat Ulum. His hospital was to treat this nation. The vaccine he wanted to use was well tested, proven successful for this kind of sickness. He called it education. Unfortunately, many of them opposed using this hospital or this vaccine for treatment. Except even people like Akbar himself used this vaccine to keep himself healthy and his family healthy, but opposed its use for general public on different pretexts. But this physician was determined to fight this pandemic. He dedicated his entire life to serve this hospital and provide treatment to as many as possible. He sold his belongings, his property to run this hospital, to provide vaccine to many as possible. Slowly, the people started realizing the importance of this vaccine imparted in the hospital run by Sir Syed. Even in many humanitarian British people tried to help him. And finally, this hospital started working and treating a lot of people. Okay, now we'll just cut down short the history. Today, when we are celebrating this day, in memory of this physician who served us who saved us from this fatal disease, it will be appropriate to award him title of Physician of the Nation and say, thank you, you saved us from this pandemic of ignorance, illiteracy, incompetence, and gave us a new life of vitality, virtues, and victory. Thank you very much. Very good. I will add one. Physician का सिंबल यूज किया है वो बहुत खूबसूरत है। बहुत उम्दा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही उम्दा। The